आप कहिए हम जंगल के बादशाह अंडा दें या बच्चा दें, क्योंकि आप मुझे लग रहा है आप आखिरी बात कर रहे हैं। ना आप पहली किश्ती में चाहते हैं ना दूसरी किश्ती में जाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं ये आखिरी बात कर दूं जो मुझे जेब नहीं देती, क्योंकि मैंने ऐसा हल्फ उठाया नहीं है। सर आपने हल्फ उठाया है प्रिजर्व का इंग्लिश का कॉमन मतलब क्या है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आप वर्ड्स पे जाते हैं और आप स्टारे डिसाइसिस में नहीं जाते तो फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन का एक लफ्ज इधर उधर नहीं कर सकते। प्रिजर्व मींस यू हैव टू प्रिजर्व इट, डिफेंड इट, यू हैव टू डिफेंड अटैक। और कितना वक्त आप ले रहे हैं अभी आप बताएं। सर मैं क्वेश्चन मेरे मेन जी Learned counsel coming back to, sir, अगर mind वो बहुत सारे उनके questions थे। Learned counsel coming back to my Lord Justice Ijazul Hasan's question, ये जो interpretation है 191 की, how do we read into this provision that subject to law means a restriction in law and that the primacy is to be given to the rules made by the Supreme Court? ये जरा एक्सप्लेन कर दीजिएगा ना सर। जो 191 की पास है, दे आर डायरेक्टली कमिंग, जो मंसूर शाह साहब ने भी क्वेश्चन किया था, दे आर कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है। द क्वेश्चन ऑल्सो राइज, कैन द कॉन्स्टिट्यूशनल रूल मेकिंग पावर कैन बी स्टल्टिफाइड बाय अ सब कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन? Because whatever has to be done, it has to be done through an internal mechanism। ये तो आप दोहरा रहे हैं अपनी बात, कोई नई दलाइल दीजिए ना। मैं अगली बात के ऊपर प्लीज सर एक मैं सिर्फ बात कर लूं, जो जवाब जो था वो, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन इसी कंटिन्यूएशन में सवाल देखें ना, आप ये 191 की बात कर रहे हैं, वो तो जो उसकी ओपनिंग वर्ड्स हैं सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, जो मैं समझा एज फार एज इसमें तो शायद ये है कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स बना सकती है अपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के, लेकिन दैट मस्ट बी सब्जेक्ट टू लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों पार्लियामेंट बनाती है, पार्लियामेंट का इख्तियार है। उन इख्तियार के तहत, उस लॉ के तहत जो भी रूल्स बनेंगे, हम उस रूल से, उस लॉ से हट के बाहर नहीं जा सकते। क्या इसका ये मतलब नहीं? यही क्वेश्चंस तो आप लोगों ने रिजॉल्व करने हैं। इफ द मेजॉरिटी विल तो फिर करने, तो फिर आप बैठ जाइए, हम कर लेंगे, आपकी जरूरत नहीं है, आप तशरीफ रखिए। फिर आप मेरी बात को सुने। द क्वेश्चन इज दिस, व्हाट आई एम सेइंग इज दैट 191 को आप आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते। 191 में सिर्फ नहीं, मगर आप बात ही नहीं समझे। अगर आप उसकी ओपनिंग वर्ड्स देख लें, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, माय लॉ, जरा सुन लीजिए ना। जैसे जमाल साहब ये कह रहे हैं, तो ये एंड लॉ लिखने की जरूरत क्या पेश आई? सिर्फ लिखते सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट में मेक रूल्स रेगुलेटिंग प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट। ये लॉ जो दो लफ्ज हैं, इसको हम कैसे इसकी तशरीह करें, ये सवाल है। सर इसमें एक जवाब तो ये है कि जिस वक्त ये रूल्स बने थे, अगर कोई लॉ मौजूद हम आइन की बात कर रहे हैं, रूल्स की बात नहीं कर रहे हैं। जी मैं आइन, सर जिस वक्त आपने सुप्रीम कोर्ट रूल्स बनाए थे, उस वक्त अगर कोई लॉ मौजूद होता तो उसके आप फॉलो करते, विच आपका कहना ये कि जब आइन बन रहा था उनको नहीं था। सर The question is this, जिस वक्त आइन बन रहा था, आप ये बताएं कि subject to का क्या मतलब है? Is that an enabling power? Does it give competence, or is that a limitation? Does that restrict the power? Because the understanding, one understanding is that subject to constitution and the law is where the competence is being driven from. Whereas the other understanding can be that subject to, the prefix subject to, is a limitation. Now, the other question that goes with the understanding of law, if law is more than just an act of parliament, and law can mean rules, regulations, ordinances, policies, whatever is in the field of law, so all that will govern the ability of the Supreme Court to make its rules for practice and procedure, because law is much more than, it involves more than just an act of parliament. If we go by the words which are used in the Constitution, an act of parliament is different from the use of the word law. Which is why subject to becomes relevant. So what does subject to mean? It means... But if I may be allowed to complete my point of view is that under Article 191, only Supreme Court has been given the power, whereas in the Constitution, if your Lordship see Article 67, 72, where the particular...
साहब आप ये आप जवाब देते नहीं हैं, आप दूसरी जगह चले जाते हैं। सर मैं अपनी बात तो मुकम्मल कर दूं ताकि आप सब्जेक्ट टू का मीनिंग बता देना जी, हाउ शुड वी आपसे रीड सवाल इट? एक हुआ ना, सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ? सब्जेक्ट का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई रिस्ट्रिक्शन है तो रूल्स उसको फॉलो करें। यही पूछ रहे हैं या नहीं, जवाब भी देते कोई भी नहीं है हसन साहब, ये रिस्ट्रिक्शन की क्या बात है? कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती इसमें। एक मिनट, सब्जेक्ट टू लॉ, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, रिस्ट्रिक्शन का कोई इशू ही नहीं है ना। कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट रूल बना सकता है। अब ये लॉ आ गया, इसमें भी अगर हम कुछ चाहें तो हम रूल बना सकते हैं, क्योंकि ये लॉ के अंदर कोई चीज़ें आई हैं, मिसाल के तौर पे उसको रेगुलेट करने के लिए रूल बनाने की ज़रूरत है। सुन लीजिए, कोई भी सेक्शन ऐसा है उसके लिए भी हम रूल बनाना चाहें तो विद इन द प्रेमिस ऑफ दैट लॉ सुप्रीम कोर्ट में रिवाइज द रूल्स बिकॉज सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। बात समझ आई आपकी? सर अब क्वेश्चन एक अराइज होता है तो ये रिस्ट्रिक्शन और इन्लार्जमेंट का इशू नहीं है, ये दिस इज द क्वेश्चन ऑफ इंटरप्रिटेशन। एब्सोल्युटली सब्जेक्ट टू बहुत जगह इस्तेमाल होता है। देयर आर सो मेनी वर्ड्स यूज्ड इन द लॉ, सब्जेक्ट टू लॉ, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन, notwithstanding anything contained in the constitution, non-abstention clause। तो ये जो है सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज द क्रिएचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन। सर सुप्रीम कोर्ट इज नॉट द क्रिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या मतलब? सो सॉरी, आपके सुप्रीम कोर्ट कहाँ से बना है? जी नहीं, दैट इज राइट। सुप्रीम कोर्ट इज द क्रिएशन, सुप्रीम कोर्ट हैज बीन क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट्स करेक्ट। सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, जो भी लॉ होगा चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद हो, लॉ में मौजूद हो, हम उसके मुताबिक रूल बना सकते हैं। बिल्कुल चलेंगे। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग में तो इस लॉ के बाद भी हम रूल अपने अमेंड कर सकते हैं। सर क्वेश्चन ये है, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है आप बना सकते हैं, बट क्या राइट ऑफ अपील है, अपील है, उसके लिए हम अपने रूल में कर सकते हैं कि इस अपील को हम किस तरह हैंडल करेंगे। राइट ऑफ रिव्यू है, हम चाहें तो उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसका कोई इतना नैरो इंटरप्रिटेशन नहीं है कि सब्जेक्ट लिख दिया तो बस हाथ पैर कट गए, सुप्रीम कोर्ट खत्म हो गया पूरा। देखिए, दैट इज फॉर योर लॉर्डशिप्स टू डिसाइड। व्हाट माय सबमिशन इज phraseology subject to itself, the phraseology used subject to the constitution means what there is a restriction in the constitution. Absolutely. You cannot go beyond that. It's not इसी beyond तरह that. subject to law means It's correct. unless restricted by law. But कौन सा law which exists for the reason कि subsequent legislation के लिए relating to the Supreme Court there has to be a specific authorization in terms of 55 item 55 जो specific authorization नहीं है सारी constitution में। That is the precise question your lordship. नहीं मिस्टर हसन, आप हर चीज पे प्रिसाइज क्वेश्चन वो कह रहे हैं, अपना तो आपका जवाब ही कोई नहीं। जवाब तो Whoever आप सुने says तो मैं whatever आपको to you, you agree with that. अच्छा नहीं, आप देखें सवाल आपसे ये है जो I'm just adding to what Justice Ijazat just said. 191 बड़ी important का सवाल है हमारे सामने। एक ये सवाल इस तरह भी पढ़ा जा सकता है 191 को, and that's what we want you to assist us with, you see, whether at all 191 envisages that there can be a law made by the Parliament that regulates practice and procedure, and once that law is there, then the Supreme Court rules will be subject to that law. So the fact that it is mentioned there that there could be law relating to practice and procedure makes it an enabling provision. Is that a correct interpretation or not is a question I'm asking you. Subject to law, constitution and law, is that an enabling provision because the constitution is saying that there could be a law relating to practice and procedure, meaning by that there is a substantive power given to the Parliament to make law relating to practice. Is that a correct interpretation? And could we, if we have any problems, could we just tag along entry 58 with it to then make this complete? ये पहला सवाल आपसे पूछेगा, जवाब प्लीज दे दें कि आप ये पढ़ते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में पावर है कि आप प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के लॉ के लिए लॉ बना सकते हैं, वरना उस लॉ का क्या मतलब है 50 आर्टिकल 191 में? रिडंडेंट हो गया वो लॉ का वर्ड। मैं जवाब दे दूं अगर आप इसका जवाब दीजिए, कब से मुंतजर हैं सर। अगर आप 191 को आइसोलेशन में पढ़ेंगे तो आपकी बात
ठीक है कि लॉ रिस्ट्रिक्ट करते हैं, लेकिन अगर आप 191 को 142 और एंट्री 55 से पढ़ेंगे उससे क्या पढ़ेंगे तो उसमें पावर नहीं है, तो उसमें पावर नहीं है। ओके चले, ठीक है, आपका जवाब आ गया। अब जरा घड़ी देखिए और टाइम आपका कितना हो गया जरा। आई एम ग्रेटफुल फॉर, If I may ask you a question. मैंने तो अभी आर्ग्यू ही नहीं किया, क्वेश्चंस ही आंसर कर रहा हूँ। इसी तरह होता है, don't worry. Article 1 में जो ये पावर, ये जो सब्जेक्ट टू लॉ है, कैन पार्लियामेंट मेक ए लॉ in exercise of Article 191 repealing the Supreme Court rules 19. So that is what Let's take it one नहीं, step. यही तो सवाल है आपसे कि क्यों नहीं। अब अगर आप हर दफा ये सर उसमें इबहाम है ना, दैट इज, ये तो आपने इंटरप्रेट करना है। छोड़ दीजिए, फेयर नहीं है ना, कर लेंगे हम इंटरप्रेट। आपका क्या फायदा। शुक्रिया। सर मैंने तो आपको मेरा मेन पॉइंट है, चलिए फिर दूसरे हम उनसे पूछ I have some questions for you, so stick around at this rostrum. Now you say that the law that Parliament can make under 191 cannot repeal the Supreme rules made, which are currently the Supreme Court rules. Absolutely. Can there be an implied repeal? They cannot be, sir. Now, order, for example, to take one example, order 11 of our rules says benches shall be constituted by the Chief Justice. Now, section 2 of this law constitutes a committee of 3 to do the same job. It follows from this that there is an implied repeal of order 11. But your case is that since there can be no repeal, there can't be any implied repeal. So on that basis, potentially we have now a conflict between what section, assuming the legislative competence, section 2 and what the Supreme Court rules are saying. Now, how is that to be addressed? How is that to be addressed? If your submission is correct, there can be no repeal, therefore there can be no implied repeal, yet there is section 2 of the Act. In section 8, they have provided an overriding clause, which effectively is an implied repeal. But you say that can't happen. So if Parliament makes a law like this, there is a conflict, and here is the conflict, I'm giving you one example of it. How will that be resolved? So that will be very difficult to resolve, because I would humbly submit that my answer to your question would be that the Parliament has got no power to do that. Because Parliament, sir, your function cannot be controlled by the Parliament. That's against the... Now, if I may, in light of this very interesting debate or discussion that is going on, what does subject to law mean? If I may draw your attention to the 1956 Constitution. In that Constitution, the third schedule provided the rule-making power of the Supreme Court. ठीक है? और आप उसका Article 177 पढ़ेंगे. है आपके पास किताब? जी 56 का Constitution Subject to जो है ना, अगर ऐसे देखें. ओरिजिनल jurisdiction का रूल मेकिंग का. नहीं, 1956 Constitution के थर्ड शेड्यूल में रूल मेकिंग पावर थी सुप्रीम कोर्ट की. इसमें बैग 56 कॉन्स्टिट्यूशन दें जी. अगर मैं इन द मीन टाइम मैं आपको पढ़ देता हूँ. ठीक है, उसके that had to be read with Article 177. Now this is very interesting, and my question to you is whether language as used in Article 177 and the language used in Article 191, is there any difference? 177 of the 56 Constitution said, until other provisions in that behalf are made by Act of Parliament, the provisions of the third schedule shall apply. Right. So it seems to me that here was a direct enabling ground. Third schedule said rule making power with the Supreme Court and the High Courts, but 177 said until other provisions in that behalf are made by Act of Parliament. Here the language is not like that at all. And if we regard law as used in 191 to be an enabling power, then that sets up this conflict
because the law cannot repeal the Supreme Court rules, there can't be an implied repeal. So maybe one possible way of avoiding this conflict is to read law as meaning that it is only it can only apply a break, or let's say it's not an enabling power. Because the framers of the Constitution did have Article 177, they could have followed this language. They could have said, until other provisions in that behalf are made by Act of Parliament, Supreme Court may make its rules. They didn't do that. If you are right, and as you say, it is for us to ultimately decide, if the law cannot repeal the Supreme Court rules, if the law cannot impliedly repeal the Supreme Court rules, then where does the conflict go? And maybe if to regard it as not an enabling power allows for the conflict to dissipate. Because the rules have the constitutional power. That is also a question, that whether the parliament can undo a thing which has been done exercising the constitutional power. The parliament cannot. That is the answer. See, in Baz Mohammed Kakad, this court has very specifically held that because these rules have framed in exercise of constitutional powers, they cannot be displaced, amended, modified, overruled by ordinary legislation, because these rules stand at a higher pedestal. This is what I have actually reproduced Baz Mohammed Kakad's citations on that basis. Yes. Mr. Hassan, I believe it will be last. अब आप कितना टाइम लेंगे आप बता दीजिए. मैं points को सिर्फ आपको कर लीजिए खत्म. हाँ. Sir, अमीनुद्दीन साहब is whether we were able to frame rules in 1980 in derogation of the existing law at that time. My lord, my honest answer would be no, if the law would have existed. Because this is an exercise which has been done. So perhaps one way to look at it would be that if you were to look at your rules in future, but then you would have to see whether the law provides for anything which is within the constitutional framework or not. That's a very important question which we are missing out. Because here, in fact, one of the other aspects that this committee is doing, it is preventing an access to the Supreme Court directly and preventing the Supreme Court from making an order. This is the question. If the Parliament legislates, which is as per your contention in contradiction with that rules, it is the basis for striking down of the legislature's legislation. Yes, if it is in conflict with the clear provisions, very simple provisions of the Constitution, it is a reason to strike it down. If I may follow up on that, you see, the 1980 rules replaced the rules of 1956, the Supreme Court rules 1956. The Supreme Court rules of 1956 were existing law within the meaning of Article 268 when the present Constitution came into force on the 14th of August 1973. That is when the power of, or the jurisdiction, whatever you want to call it, if such jurisdiction exists, of Parliament to make a law came into being under Article 191. So there was no vacuum, there was no break. As soon as that power came into existence, there were already the Supreme Court rules in the field, the ones of 1956. So therefore there was a continuity perhaps. All that happened was that in 1980 those rules were changed. So if I may ask you my question in a slightly different form, could say in 1974, 1975, 1992, sorry, not 1990, say in 1973 or 1974, 1975, could Parliament have made a law under 191 repealing the Supreme Court rules of 1956? No. No, absolutely not. So the same, so the enabling aspect of it, the fundamental point that I like your brevity. I said I like your brevity. Leonard Counsel. You say yes, no, which we really appreciate. Leonard Counsel. Are we concluded? Because I want to hear you say something more, if you want to say something more. Leonard Counsel. The Lordship would allow me, I have submitted, I am still answering the question, my Lord. Leonard Counsel. What can I do? I like your brevity. Leonard Counsel. This is a question for you and for all the councils.
can you cite any example from any jurisdiction around the globe that give precedence to rules made by an unelected court over a primary legislation made by a competent forum? Your Lordship, I would respectfully submit, in fact, I wanted to make, Your Lordship may rethink and rephrase this. Answer the question again, you're doing this. I would respectfully say, this is not answer the question. दुनिया में होता है. which is created by the दुनिया में पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून से बाला कोई रूल्स हो सकते हैं तो वो साइट कर दीजिएगा एग्जाम्पल. जी मैं आपको करके उसका जवाब मैं दे दूंगा, बट जो क्वेश्चन है रूल्स जो है दे हैव टू बी विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क. चलें फिर आप दे दीजिएगा, जवाब दे दें. मतलब माय नेक्स्ट पॉइंट हसन साहब इसी क्वेश्चन में इसको बढ़ाते हुए, क्या आपके कहने मतलब जो मैं समझाऊं, आप कहते हैं कि ये रूल्स वंस फ्रेम्ड कैन नॉट बी अल्टर्ड, और अगर ऐसी कोई बात है तो कॉन्स्टिट्यूशन से आप बताएं, क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन में डील कर रहे हैं, कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई बार लगाया कि पार्लियामेंट हैज नो अथॉरिटी टू मेक लॉ व्हिच इज इनकंसिस्टेंट विद द रूल्स फ्रेम्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट? ऐसा कोई प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में है तो देन नॉट, बता दें क्या ऐसा. let's put it another way. If there is no bar, there is no permission also, and this is what we are arguing since morning, that there is no permission for the parliament to make the law. हम वापस उस पे आ जाते हैं. If there is no specific bar, there is no permission at all. Your Lordship, there is a way to look at the constitution. हम वापस 199 में आते हैं. ओपनिंग वर्ड्स हैं, the rules must be subject to and the constitution And the law, but who will make rules ताबे हैं कानून के, और कानून 142 में बताया गया है पार्लियामेंट का काम है to make law. मैंने शुरू में एक आर्गुमेंट देखिए आप जरा आप बात की देखें, वही बात बुनियादी बात वहीं ठहरती है. उधर ही है सर, आप तो सुन रहे तो लेना. वो जो एजाज साहब का सवाल था, देखिए अगर ये कानून में कोई ऐसी चीजें हैं जो कि गैर आईनी हैं तो उनको तो स्ट्राइक डाउन किया जा सकता है. मगर एजाज साहब का सवाल अपनी जगह है, वो आप सवाल वो तो आपने बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया कि वो बना सकते हैं या रूल्स या नहीं, वो आप हाँ या ना जवाब दे देते हैं हमें, और चलिए फिर अगर यही जवाब है तो हम सुन लेंगे. सर मैंने जवाब तो दिया था उसका, आपने तो आप कह देते हैं ना हाँ बस. सर मैंने तो लॉ से हम किया हुआ है, हम आपको आर्टिकुलेट कर रहे हैं बेहतर चीजें. मैंने तो जवाब दिया हुआ है जनाब को. अगर तो नहीं, फिर अगर नहीं है तो ना करें ना, किसी और को मौका देते हैं ना. मैंने तो सर जवाब दिया हुआ है कि वो नहीं छोड़िए ना, फिर आप रोस्टर में अगर आपको कोई वही बातें अगर हमसे एग्री या डिसएग्री करेंगे. और बता देता हूं सर, जरा जल्दी कर लें प्लीज. सर दिस लॉ affects brevity is the soul of wit. Absolutely. Thank you for agreeing. For a change, I believe. Sir, the Constitution has created a balance. The three please, अब ये बात कितनी दफा कर चुके हैं, trichotomy of powers की. Sir, नहीं, मैं if that's a different point है. जी. After 18th constitutional amendment, the Chief Justice, जो पुराना concept था, Chief Justice is first among the equals, has gone away, because the Constitution has now given a provision in the Constitution where the Honorable Chief Justice has a supremacy or a primacy, at least to the extent of the administrative functions, because the Constitution has provided a provision that the senior most judge would be entitled to become the Chief Justice. And there are other functions in the Constitution which are ascribed or prescribed for the Honorable Chief Justice. You're just waffling. You're not articulating any contention. This is what. So what I am saying. I mean, it's obvious. It's written there. What's so profound here? उसके Constitution के consequences है ना. Mr. Hassan, we will not permit this. हर चीज का एक सर meaning है ना. आप उसको देखें तो वो बात आ जाएगी ना कि सुप्रीम कोर्ट के जो फंक्शंस हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑफिस को आप इस तरीके से थ्रू अ सब कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेशन नहीं कर सकते. है ना, कोई मजीद बात कर लें ना, मजीद कोई पॉइंट कर लें, वही आप बात 6 दफा करेंगे. सर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बेंचेस जो मैंने केस लॉ इज द सोल प्रेरोगेटिव ऑफ द ऑनरेबल चीफ जस्टिस, और इसमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए जो एक इट्स अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम, मैंने केस लॉ आपको
दे दिया है। एंड माय लास्ट पॉइंट जो अपील के अंदर मैंने ऑलरेडी पॉइंट आउट किया था कि अपील 185 के अंदर देखिए उस पर आपने बिल्कुल बात नहीं की, और मंसूर साहब ने ये बात की थी। इस कानून में दो चीज़ें हैं, नाम तो इसका सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है, मगर एक राइट भी क्रिएट कर रही है, राइट ऑफ अपील। वो ये दो चीज़ें अलग अलग हैं। इसका नाम शायद हो सकता था ज़रा कुछ और, मगर ये सिर्फ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को नहीं कर रही है, एक सब्सटैंटिव राइट भी क्रिएट कर रही है। उधर उस पर आप कोई अपनी राय देना चाहते हैं? जी।